The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. Good morning, everyone. I, Muskan Baveja, student of Delhi Metropolitan Education, welcome you all to Career in Media Series 2022. CMS is a 5-day interactive session with industry experts organized by DME Placement Cell to apprise the student of the latest industry trends and scope in the media sector. I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. Delhi Metropolitan Education is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, and approved by Bar Council of India. The institute offers BBA, BA LLB, and BBA LLB with BCI approval and BA JMC programs. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of the industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institute in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include BG Varghese Lecture Series, Peer-to-Peer FGP, International Film Festival SIFI, International Conference ICANN, and Ritika, a convention of media students. Newly added to the list is WIS, Vibrant India Series, and now CMS. The Training and Placement Cell of DME Media School acts as an interface between the industry and academia by facilitating professional opportunities for students and organizing guest lectures and special sessions with industry experts and senior media educators. The Training and Placement Cell function under aegis of DME Media School. Therefore, as an extended activity of the Placement Cell, the DME Media School keeps organizing interactive sessions with media experts. Now, I request Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, to address the gathering. Thank you, Muskan. As she has told already that this session is part of this Careers in Media series, which we started last year. And we have expanded this further to have a more number of lectures so that different aspects of media can be included as part of this. Media is a very diverse field, and our students join different kind of sectors, different streams within the domain of media, ranging from journalism to advertising to public relations to event management, and from print to radio to television and films. But then whichever area somebody is going, there are certain constant features, some constant things which everybody has to learn, has to know before entering the industry. And there are certain things which are specific to a media sector. So today, Mr. Prabhas Shungulu is with us, who is a very seasoned journalist and is working with from print to television channels, and now he has his own digital channel. So he's a versatile personality, and he has varied experience working on different media platforms.
and focusing on news or the journalism. So in today's time, even if somebody is not joining the conventional media, then on the digital space, there is a lot of scope. So that also needs to be understood. So today's session is focused broadly on journalism and whatever offshoots are there and the way it's being practiced on different media platforms. So I'm sure all that understanding will be provided by Mr. Prabhat Shunglu. He has been associated with DME since long. When the things were in the normal phase and not as Corona, then he used to come on our request to interact with our students and talking to them and taking their lectures. But after this Corona has happened, and today incidentally is the day when formally we are saying a goodbye to Corona in DME, in the sense that from today the college is open for the students. But this session was initially planned as an online session. So that is how we are having this hybrid wherein those who are joining on their laptop or phone remaining at their places, they are there. And the students who have come to college campus, they are being seated in Studio 62. This is a beginning of the hybrid also formally for the teaching purpose. We have been having many sessions in the hybrid mode, be it this film festival or the international conference, but as far as the academic discourse is concerned, this is the first session of this kind in 2022. So I welcome Mr. Shunglu once again, and I keep the floor open for further interaction. Thank you. Thank you so much, sir. Our guest for today is Mr. Prabhat Shunglu. Before I hand it over to him, I would like to share a brief note about his profile with you all. He is a senior journalist who has worked with print, broadcast, and digital media for almost 3 decades. He has worked with some top media brands like The Time of India, Aaj Tak, Star News, News 18, Rajya Sabha TV, and News Nation. He has covered the conflict in Kargil, Afghanistan, and Iraq, and several other national and international news developments. He has written 2 books and a novel, Newsroom Live. He has also translated a biography of former PM Chaudhry Charan Singh, written by renowned political scientist Paul Brass. Mr. Prabhat Shunglu has taught at IP University, Sharda University, APJ School of Mass Communication, Vivekananda Institute of Professional Studies, and he was Dean of iZoom, a media school run by News 24. Prabhat sir is now a YouTuber. He hosts a daily political show on his YouTube channel, The News Buzz. Now I hand over the session to Prabhat sir. Thank you, Muskan, and thank you, Amrish sir, for such a lovely introduction. अच्छा लगता है अपने बारे में, अच्छा मुझे नहीं पता ये सब चीजें मैंने की हुई हैं. Anyway, no, one thing I missed out on my short profile was I think I didn't include the name of this institution, the DME, and I was associated, have been associated with it, as Amrish sir has also said, for quite some time, of course, Corona and all that. So I'll come back again if Amrish sir and Sushmita ma'am will invite me. And so let's begin today's session. And it's a very important topic for students, especially for the final year students, because I think most of you, or at least a majority of you, will be looking out for seeking out a job, and it's a vast field out there. You have plethora of job opportunities there in the fields you would like to kind of really experiment in, like maybe print, maybe digital, maybe TV, and even there's a world beyond that also, beyond this organized sector of print, broadcast, and digital. You have the job avenues in PR and in corporate communication and in social communication. You can even start your own YouTube channels, as I am doing right now. And I mean, digital platform, of course, opens a vast opportunity in terms of you becoming an entrepreneur by yourself. So you
are passing out this course at a time when, earlier, 3 decades ago, when I entered the profession, it was like print, and slowly TV came up, and then slowly, and over a decade and a half, digital also started to take shape, and now digital it has surpassed the other two mediums like broadcast and print. In fact, most of the ad revenues are now being directed towards the digital setup. So you must have noticed that all the big channels and English or Hindi, they now have a digital platform also, and even when they are offering a bouquet of channels, each bouquet, setup, like for instance, Aaj Tak, it has it has a setup in so many other languages also other than Hindi. So I mean, region-wise also. So they have region-wise digital platforms as well, and they are working like they work for the broadcast mode. So digital has kind of it has allowed those who always sought to have a career in broadcast. They have allowed wings to those people also, those journalists, those professionals also, and also people who are into content creation, who always wanted to write and write more. And so digital allows you both the spaces. So I don't know how many of you are still or will still be interested in taking up print as a profession, because that's not the trend these days, and I can understand why. Because of course broadcast offers more glamour, maybe more on-screen space, the opportunity to go on air and be known and be popular, and maybe on the field meet people and become the face of the channel perhaps at some point of time. And well, that is, I mean, we all have ambitions, and that's very good. That's very good. So in TV, when you're now at a stage where, some of you, you might see campus interviews or by some known channels, or you might be applying in those channels, and some of the channels are, I mean, you are very lucky that way, that you are operating from an area, from a geographical location where, all the, this is, I mean, Delhi NCR is the hub, is the mecca of journalism, so to say. Like Mumbai, which happens to be mecca for those who are interested in making films, maybe. So that way you are lucky that you are studying in one of the top colleges of Delhi NCR, journalism colleges, and you don't have to run around much in seeking a job for yourself while applying for most of the channels. In fact, operate from Noida. They have their headquarters in Noida, the very place very close to your institute, in fact. So I know, and most of you will be applying in those channels, and good for you. But the thing is, now you must have noticed that see, the competition is growing, and there's a stiff competition to first find a place for yourself, to enter that profession, and then of course sustain yourself in that profession. For that you need a really good grounding in terms of not just an ability to write, but also you should have a feel for things happening around you, and not just in your city, but also in your state, and not just political developments, but also socio-political developments, and also developments in international arena. I mean, now since we are talking at a time when we are we have a very important role to play in world politics also, and after all, world is after all just a global village, and we are a very important part of that village, and we have an important colony. So what we do or what others do impact us, and what we do also impact the world and world economy and world politics. So we have to be very sure about what we are trying to seek in terms of, when
Are we, I mean, after this course, are we more of a technical person or are we more of a content person? So you'll have to decide it for yourself. Are you more into camera work? Are you more into editing? Do you have the necessary knowledge and the know-how of how to edit just not a 2-3 minute show, but maybe a longer video show? Are you interested in actually, do social issues really matter you? Do they really trouble you so much so that you want to do a nice in-depth story about that? Or maybe make a documentary, or maybe just take your mobile cameras. Now, talking of mobiles, you have, every one of us who's sitting here, even people outside this building, outside your college, now everyone is a citizen journalist, so to say. We are, as students of journalism, we are studying it in a very organized way, in a very structured way in the colleges that we are in. But come to talk about it, I think we are all citizen journalists, so to say. We are all concerned about things happening around us. We are all concerned about the state of women, the state of Dalits, or the state of politics around us and the way it has plummeted, right? So what is it that concerns us? And then how to express that? Do we write? Are we on social media? And do we write enough to convey our feelings, our expressions? And what, because this is going to help us, and this is going to help us in not just taking up a job, but also kind of shaping our future, So you'll have to decide after 3 years into this course and almost ready to take a job, a good job that comes by you. Or some of you might still be considering going for higher studies, which is fun enough and very welcome thing. And whether in media studies or in any other field of social sciences discipline, so you're most welcome to do that. And it's always good because it pays. It will pay you in the long run. But as far as job opportunities in media studies, and where do you go after this? And as I told you, you have a world of opportunities lying before you. Channels हैं, अखबार हैं, digital platforms हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपका मन किस में लगता है? आप लिखने वालों में से हैं, आप प्रोडक्शन साइड के हैं, आप टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग है, you really want to explore the world by taking out a camera, or you want to be a reporter, and or you want to anchor a show, or maybe become the face of the channel. But you must also know that there is a lot of homework that goes into shaping professionals, good professionals. So you'll have to ask yourself, want to become a good professional, or you just want to take up a job and just like any other person who kind of does, who graduates in commerce or science, then he sits for banking exams and becomes a PO, and then he gets married, and then he has a family, and the life is cool. So here in the field of media studies, life is never going to be cool. In so many ways. It's going to be cool in so many ways, and it's not going to be cool in so many ways, because you'll have to be on your toes 24/7 if you want to be a reporter, a journalist, a true bred journalist that way. Because the information sansar, the information world is not going to allow you even a minute to rest. And it will always keep you on your toes. And there's so much happening around you in such a fast pace that sometimes it boggles people like me also. And of course, technologically, of course, we are, now I think in another year or so, 5G will be taking over all our lives, and it's going to kind of wreak havoc in so many ways. And the technology itself. So technology is driving the medium also. So now you have drones coming in, and
doing all those, like many channels have, they have acquired drones and they are shooting from drones. Go 20 years, 30 years back, and the kind of journalism that Western countries do, they travel, reporters often travel within the cities also. They often travel by helicopters and to cover maybe a fire or a chase by a police, so all those things now with 5G, I think the shape of media is going to change, and you are entering this medium, this profession at a time when life is going to be a profession. Your profession itself is going to be so much more challenging than what it was when I entered the profession. So it's going to be even more interesting, not just challenging, more interesting, more fun, more adventure. So and as a journalist, I always looked out for adventure, for some excitement, and not just glamour alone, which drove me, but it was always covering new grounds and covering new stories, covering big stories, covering breaking stories, covering in-depth stories, doing interviews, not just at the city level, but interviews of personalities who shape our society and politics. So all this drives you. Does it all drive you too? If the answer is yes, then you have a very successful career that lies ahead of you. Believe me. Whether it's in joining a newspaper or a news portal or a TV news channel, or getting a job not quite satisfactory at the beginning, but making your way towards, getting even a better job as you go on in life. I mean, that matters. The thing is, what drives you? तो चैनलों के लोग अगर आते हैं आपके पास, तो आपके लिए इंटरव्यू भी एक सेशन हो रहा है आजकल, ग्रुप डिस्कशंस हो रहा है. ग्रुप डिस्कशन में 6 लोगों को बैठा दिया, और वो 6 लोगों को बैठा दिया, और वो 6 लोग कोई भी हो सकते हैं, उनको एक टॉपिक दे दिया कि हिजाब को लेकर आप हिजाब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, अब बताइए, इस पे डिस्कस करिए. अब 2 लोग बैठे हुए चैनल के और 6 लोग वहां पर आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है. नाउ द थिंग इज, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि हिजाब के को लेकर कंट्रोवर्सी क्या है और अब तक डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, कहां तक बातें, यानी कि इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए. प्लस उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने का, आपका प्रोसेस करने का आपके पास तरीका है नहीं, बिकॉज जर्नलिज्म is actually what it teaches you. It teaches you to assimilate the information and also kind of process it. When you process it in a fine way, you put it down in writing or you express it on camera for a better understanding of the viewers or of the readers. So group discussions honge, aapko written exams bhi hoga where they are going to test your general knowledge, your awareness, your test of writing skills, whether in Hindi or in English. भाषा मैटर नहीं करती है. आप हिंदी में लिख रहे हैं, आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, भाषा को बिल्कुल आप समझ लीजिए. जो भी लिखें आपको होना चाहिए कि यार ये जो है मेरी पकड़ के हिसाब से अच्छी भाषा और मैं इसको समृद्ध करूंगा, और वही भाषा आपकी उसको अपनाना चाहिए ना. और इसलिए इंग्लिश और हिंदी की बात नहीं है. आप जिस भाषा में भी आगे आप बांग्ला चैनल ज्वाइन करते हैं, चूंकि आप बंगाली स्पीकिंग है, आप वो ज्वाइन करिए, वहां का अखबार ज्वाइन करिए, बट बी गुड एट दैट. ओके, सो भाषा को लेकर बिल्कुल भयभीत मत होइए कि कोई अंग्रेजी में कर रहा है या कोई हिंदी में या कोई किस में. भाषा आपकी अपनी, आप अपने तरह से चुनी है उसको, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं इसके बारे में क्लैरिटी अभी से होनी बहुत जरूरी है. तो जैसा कि मैंने कहा कि आजकल कंपटीशन बहुत है, और बहुत का मतलब है क्योंकि क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है ना. सप्लाई बहुत है, लोग बैठे हुए हैं. आप देखिए 160 बच्चे 3rd ईयर में हैं एक कॉलेज में, दिल्ली एनसीआर के. आप एक अनुमान लगाइए कि दिल्ली एनसीआर में और कितने जर्नलिज्म की, मीडिया स्टडीज के कॉलेजेस होंगे जहां पे कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे, और उसके हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली
उतनी नहीं होती हैं, लेकिन हाँ अच्छी होती हैं और बीच बीच में आती हैं और बहुत सारी आती हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अब आपको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप उसके लिए तैयार हैं। और आप तैयारी का मतलब है कि आपने अभी तक जो कोर्स किया है उसके फायदे, उसको अब उसका आकलन करने का समय है, अपने को टेस्ट करने का समय है। और आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, लेकिन 3 साल में आपने देखा कि आपने ना फेसबुक पे कोई ढंग की पोस्ट लिखी है, आपने केवल अपने दोस्तों के साथ पिक्स डाली हैं और हेलो हाय किया है। और बाहर जब गए घूमने के लिए तो वहां के कभी नदी की, कभी पहाड़ की डाल दी है फोटो, है ना, कभी अपने पेट की डाल दी है फोटो। और जर्नलिज्म के स्टूडेंट आपको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में और क्यों हो रहा है। अगर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है से आपको मतलब नहीं है तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। बड़ी साफ सी बात है। गली वाले चैनल में भी नहीं मिलेगी जो आजकल गली गलियों में खुल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर क्यों और कैसे आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है जानने की, तो प्लीज आप फिर से सोचिए कि आपको जर्नलिज्म के लिए बैठना है या आपको बैंक का एग्जाम देना है अभी भी, ठीक है। फिर हमारे पास एक तो ऑर्गेनाइज्ड है, हमारे पास टीवी है, ब्रॉडकास्ट, न्यूज पोर्टल्स हैं। एंड न्यूज पोर्टल्स, जैसा कि मैंने बताया कि आजकल न्यूज पोर्टल्स क्या है, न्यूज पोर्टल्स एक्चुअली देखा जाए कि कंटेंट क्रिएशन उनका है, टेक्स्ट में भी है और विजुअल्स में भी, ऑडियो विजुअल में भी। सो इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑडियो विजुअल, देयर इज अ ह्यूज सेक्शन आउट देयर जो कि सिर्फ विजुअल क्रिएट करता है, विजुअल स्टोरीज क्रिएट करता है ऑन द न्यूज पोर्टल। देन यू हैव अ सेक्शन व्हिच क्रिएट टेक्स्ट। सो आई मीन यू हैव अ चॉइस देयर। हम लोग के समय नहीं था, हम लोग के समय था अखबार है, जानो जाओ, वो भी अखबार के लिए हमें छोटे शहर से बड़े शहर आना पड़ा था। हमारे शहर के अखबार जो छोटे से थे तो हमको दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में बड़े अखबार सारे वहीं थे, तो हमको दिल्ली आना पड़ा। तो धीरे धीरे अब क्या है, अखबार, टीवी, न्यूज पोर्टल, उसमें भी वैरायटी कि आप लिखते अच्छा है तो आप टेक्स्ट वाले उसमें जाइए, आप विजुअल्स भी सीख सकते हैं, आप एडिटिंग भी सीख सकते हैं। और इसके अलावा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, नाउ देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो। अगर हम ये 3 ऑर्गेनाइज्ड इसको सेक्टर को हटा दें, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल को, तो there are political parties now which are seeking out for journalists or people who are into media studies, who have had some background in communication, to do some communication for them, right? Not just writing press releases, but maybe advising the political parties on how to interact with the media, and giving them important tips, because at the end of the day, political parties need media just as media feeds on the doings and the undoings of the political parties, isn't it? मीडिया पर्सन्स हम लोग उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन उनको भी हमारे जैसे लोगों की इसलिए भी जरूरत पड़ती है, और आजकल तो खास तौर पर, क्योंकि आप अगर डिजिटल के एक्सपर्ट हैं या आप टीवी के ब्रॉडकास्ट के एक्सपर्ट हैं, वो भी चाहेंगे कि आपने आजकल देखा होगा कि इतने सारे एबीज बनाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसको डिफरेंट चैनल्स में देती हैं, उनके एबीज चलते हैं, और ट्विटर हैंडल्स पे उनके दिखते हैं। आजकल आप उनके रैलीज के बारे में, रैलीज कहीं और हो रही हैं और उन्हीं के मीडिया सेल जो है वो रैली का एक पोर्शन, एक क्लिप जो है 2 मिनट की, 30 सेकंड की, 1 मिनट की ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे डालता है, एंड यू कैन यूज देम and as a journalist, and you can of course they put it out for a wide section of their audience, but even as media persons you can use those clips and and use them kind of in your story, and kind of attach them in your stories, tag them later, and embed them in your stories, writing for a news portal, or even if you are writing a blog. How many of you have a blog? Do you have a blog?
Anyone? Blogs hai aapke? Everyone have. Okay, that's good. That's good. Or blog is I think it's a very good space where you can actually express yourself in so many ways, and that's a stepping stone of that, and also a marker of how seriously you really want to pursue a career in content creation and journalism, and as a reporter or a script writer. That's very good. And if you are writing, if you have a blog space and you are writing regularly on that, in that space, so good for you. And Sir, if sir is asking anything, you can raise your hand and answer question, no? मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर कुछ पूछ रहे हैं तो आप लोग अपना हाथ उठा के पूछ सकते हैं वहां पे. हाँ कैडी भी आप You can raise your hands. Sir can ask anything. अभी हम क्वेश्चन आंसर का राउंड भी सर लेंगे आपके इस सेशन, इस डिस्कशन के बाद सर. और तो corporate communications hai, corporate houses need media person, not just media person, they need people who can communicate, who have the ability to express, who can make out videos for them, and also interact with the media at large. I mean, and kind of it's always a two-way communication. Media means I mean, media as a journalist, you want to be a journalist, or you want to be a communicator. So when you say you want to be a communicator, you can either be a journalist, you can also think in terms of seeking a job in corporate communication, or even a lot of artisans community these days, they are seeking out for people who have the ability to write, people who have done media studies. They want to sell their wares, their products, but they don't have the platform or the ability to kind of really go out and tell the world, look here, we are doing this. So they are constantly looking out for people. They need training how to sell their wares, and these are people who are clueless about digital marketing. So have you all heard of digital marketing, and how digital marketing is also, in fact, I'll suggest that once you have completed this course, some of you who want to pursue a career in digital space, you should also think in terms of doing a short duration course in digital marketing. So many of the IIMs are also offering those courses. It's somewhere it's a 3-month course, and somewhere it's a 6-month course, but it's a good course, and I think you get a hang of how to because it's just not about content creation, but how to sell that content on a digital platform. So, and companies, even media companies, are investing a lot in selling the product on the digital platform. So right at the beginning of the career, it will be advisable for you, whoever can afford and whoever has the time and the inclination, to also kind of do pursue a short course in digital marketing, and you get a certificate. And so mostly it's a certificate course, but it's well worth a try, I must say. So, and of course, as Amrish sir said, that some of you are, of course, interested also in pursuing higher studies, and that is most welcome. I think you must, because you still have time to kind of invest in studies at this point of time, because once you are into a job, you'll not be able to find much time to kind of do your own study. And of course, but if you want to be a journalist, you'll have to you'll have to make friends with books. I still get buy about half a dozen books every month, and I still read. So even after 3 decades into journalism, I have to write a show, I have to do some research. So if you do not have the ability or the acumen to do some good research, read books, then I don't think this is you are the right profession for you. क्योंकि अब आपकी असली मेहनत अब यहाँ से शुरू होती है. अगले
15 साल तो आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको घूमना भी पड़ेगा, आपको कवर भी करना पड़ेगा, लोगों से भी मिलना पड़ेगा और अपना एक वर्ल्ड व्यू भी डेवलप करना पड़ेगा। इश्यूज, मुद्दों को लेकर आपका अपना एक टेक होना चाहिए। वो टेक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो, आपका अपना हो, ओरिजिनल हो। ठीक है, उसके लिए आपके लिए रिसर्च जरूरी है। When we are talking of hijab, or if we are talking of Kashmir controversy, or if we are talking of taxes, क्यों किसान आंदोलन पर बैठे, क्या वजहें थी, वो कौन से बिल थे, वो बिल को लेकर क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा था, उसका दूसरा पक्ष क्या था, ये सारी चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, वेदर यू आर अ क्राइम रिपोर्टर और नॉट। किसान क्या कर रहा है आपकी जिंदगी में मायने रखना चाहिए। अब उसका आपका वास्ता उससे तो डायरेक्टली नहीं पड़ता, आपका वास्ता तो बैंकर से पड़ता है। जब आप जाते हो कि भैया कैश विड्रॉ करना है हमको, आजकल तो खैर वो भी नेट बैंकिंग से हो रहा है, क्योंकि आपका वास्ता किसान से नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी बनाई हुई चीज ही आप खा रहे हो। लेकिन वो जैसे ही वो कहता है कि यार हमारी मांगे हैं, तो आप कहते हो अरे ये कौन है। अच्छा, किसान भी होते हैं, अच्छा गांव भी होता है, तो गांव में जाइए, मिलिए, लाइफ में आसपास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोग मिलेंगे आपको। गांव में दूसरे तरह की एक दुनिया है, उस दुनिया से आप वाकिफ हैं या नहीं हैं, उस दुनिया की अपनी एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एक सेट ऑफ एंटरटेनमेंट है। वहां नेटफ्लिक्स नहीं पहुंचा है तो वो कैसे एंटरटेन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड, गो आउट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, टेक योर मोबाइल। अच्छा, एक तो जो भी मोबाइल खरीदो उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, और बैटरी भी, एंड्योरेंस रेटिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, क्योंकि योर कैमरा इज योर फ्रेंड, इट्स योर मोबाइल इज योर फ्रेंड, क्योंकि आप उसमें एक्सेस कर सकते हो नेट। इफ यू वांट टू डू अ क्विक रिसर्च ऑफ एनीथिंग, so you can always ask Google, chacha, you know. So, and if you want to shoot a certain thing, maybe take a nice pics or do a good video, you have your phone with you, and maybe you are at a time you are at a spot where you know things are happening at a fast pace, and you can shoot it and maybe you know sell it to news channels who may, you know, depending on the usage and the utility of that footage, it might sell in dollars, you know, you never know. So explore करो। और अब तो दूसरा एक आपके सामने एक पूरा दूसरी दुनिया क्या है, दूसरी दुनिया है डिजिटल की, जहां आप खुद आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, आप कंटेंट प्रेजेंटर भी हो, and you don't have to work under anyone's orders. You have your own YouTube channel, you have your own website, and you are interested in a website for, let's say, pets. You love pets, you want to start a new YouTube channel about pets. Start a dog channel, start a cat channel. But the thing is, when you are talking about pets, are you able to communicate well with your audience? What do they want? You'll have to constantly seek out the things that they want. Are you able to give them what they want? Do you have enough research about pets? What do you know about pets? Do you know enough about dog breeds? Forget about cats, let's say. So ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो अब कुछ भी आप सब्जेक्ट आप न उठाइए, मैं तो कह रहा हूं आज, और कुछ भी हल्का कुछ नहीं होता, हल्का कोई चीज नहीं होती। अपना काम जो है ना वो शिद्दत से करने की चीज होती है। तो शिद्दत से अगर आप कर रहे हैं तो ये नहीं कि पॉलिटिक्स हो गई वो सीरियस हो गई और डॉग्स पर करना वो कम सीरियस हुआ, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो भी काम करिए उसमें बिल्कुल डीपली घुस के करिए आप अपना। और खास तौर पे अगर आप अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो आपसे हम
एज अ कंज्यूमर, मैं भी आपका व्यूअर हो गया, कंज्यूमर हो गया, और मेरी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है? जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया से या आज तक से उनके व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। आज तक क्या कहता है अपने उसमें टैगलाइन में, सबसे तेज, and people buy that also. I mean, in the sense, people believe that. Why? Because over the years, it has done excellent job in terms of breaking news. In fact, there was a point of time when Aaj Tak is one of the, so to say, people who revolutionize things. They enter the market first, and then they lay out the agenda for others to follow. है कि नहीं? लेकिन आज तक में पहुंचने के लिए भी आपकी तैयारी है। हम सब काम करना चाहते हैं बड़े चैनल में, लेकिन मैंने कहा जैसे बड़े चैनल में अब भी पहुंचने के लिए, और आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज जो आप सीखें या सीखना चाहते हैं, इट्स नॉट अबाउट सीखे हैं, इट्स अबाउट डू यू रियली वांट टू लर्न मोर, यस, डू दैट। कोर्स के अलावा भी आपने कभी किसी ने आप में से टेक्निकल जो भी सीखना चाहता है, कोई कैमरा वर्क, कैन यू पॉइंट आउट 5 फिल्म्स दैट यू हैव सीन एंड यू हैव सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैमरा वर्क और एडिटिंग? Have you heard of top ace cameramen of Hindi film industry? Forget about the Hollywood film industry. Netflix पे एक फिल्म है The Power of Dog. Have you seen that film? And it's been nominated, I think, for 12 Oscar nominations है उसके। तो 22 के लिए अभी। तो वो आपने कभी किसी फिल्म को कैमरा के एंगल से या एडिटिंग के एंगल से देखा, और नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? यू आर स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म. Editing is one component and a big component of it. I make YouTube videos, but and I do a lot of research before writing the script, and when I have a proper mobile or a camera setup so that to get a good quality, video quality, but then I also make sure that it's properly edited. It has good production values. Then it's a kind of a package. So आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आप शुरू करिए, अगर अभी भी नहीं शुरू किया है, कि केस स्टडी लीजिए, फिल्म को डिस्कस करिए 4 लोग बैठ के, कैमरा के एंगल से, स्क्रिप्ट के एंगल से, द हुक और द एडिटिंग, नॉट जस्ट द एक्टिंग अलोन. हम लोग एक्टिंग करके छोड़ देते हैं, अरे बहुत अच्छी एक्टिंग करी, क्या धांसू आदमी, लेकिन नहीं. अब यू आर स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, you should be examining all the aspects that go into making that film, the technical as well as the content of it. Okay, analyze it, brainstorm over it, postmortem kariye uska, and maybe then write a review of it. Write a review of it. You should be able to, and for instance, आज गहराइयां रिलीज हुई है दीपिका पादुकोण की. आप फिल्म देखने के शौकीन हैं, आप देखिए, आप गहराइयां फिल्म देखने के बाद आप एक रिव्यू लिखिए, और उस रिव्यू को फिर आप कंपेयर करिए कि 5 न्यूज पोर्टल्स ने के जो मीडिया, जो फिल्म क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इस फिल्म को किस तरह से रिव्यू किया है. सी हाउ दे हैव रिव्यूड द फिल्म, द वे दे हैव एक्सप्रेस्ड देमसेल्व्स. आप इस तरह से आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं. तो आपका कहीं बंद नहीं हो रहा है कि आप कोर्स खत्म हो गया, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पास हो गए 80%, 90%, ओ ग्रेट, घर पे मम्मी पापा खुश जाएंगे, लेकिन नहीं, चैनल्स वाले खुश नहीं होंगे. और फिर 6 महीने का तो आपको वो मिलता है समय, जिसमें आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है अपने आप को, कंफर्म होने के लिए भी 6 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है. वो देखेंगे कि आप अप टू द मार्क नहीं है, तो हो सकता है आपको कह दे नमस्कार है. तो ये सब चीजें इसलिए भी आपको बतानी जरूरी हैं कि मीडिया में ग्रोथ भी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन सरवाइव वही लोग करेंगे जो कि अंदर से वाकई उस मीडियम को वाकई अपनाना चाहते हैं. इज देयर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग?
मैंने जब इसमें आया, जैसे कि मुझे लगता था कि मैं इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, आज भी यही लगता है। मैंने कॉमर्स का ग्रेजुएट हूं, मैं एमबीए एडमिशन नहीं लिया, हो गया था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं तो लिखने लगा था तो मैं इसी में कर सकता हूँ। और आज यही लगता है कि इसके अलावा शायद मैं कुछ काम कर ही नहीं सकता। तो बैंक की नौकरी करता तो छोड़ देता, सेल्समैन बनता वो छोड़ देता, छोड़ तो खैर ये भी दिया और अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन द थिंग इज, आज भी मैं एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के फिर शो प्रेजेंट करता हूँ, 1200-1400 वर्ड्स रोज लिखता हूँ, उसका फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर उसको एडिट करवाता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ। अब आपके इस क्लास के बाद मैं बैठूंगा 1 बजे से और सारा काम निपटाऊंगा 5 बजे तक, फिर देन वेट फॉर द पोस्ट प्रोडक्शन, देन वो आएगा 7 बजे तक, फिर मैं उसको देखूंगा, उसमें कुछ और ठीक कराना वो करूंगा, 8 बजे तक अपलोड करूंगा। तो मतलब आज भी मैं 7 घंटे दे रहा हूँ एक 10 मिनट के शो के लिए। और ये तो केवल इस शो के लिए है, उसके पहले की पढ़ाई, किताबें भी पढ़नी है, रिसर्च भी करनी है और घर के दूसरे काम भी करने है कि नहीं, अपने दूसरे फर्ज भी निभाने हैं, है कि नहीं, आप लोगों से भी बात करनी है। तो ये याद रखिए कि आप are you into it, then you'll be a good communicator. You want to be a good communicator, read a lot, write a lot, and then you have a world out there, वो डिजिटल हो, वो ब्रॉडकास्ट हो। अब कंपटीशन जैसे मैंने कहा टफ है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस हैं आपके पास, you can be your own presenter and co-host of a YouTube channel you can create in just 30 seconds, and after 1000 subscribers and 4000 hours of viewing, you get registered. The YouTube will start throwing ads on your videos. You can be an instant hit. Some of my students, not many, some of my students who started a YouTube channel on their own terms are doing much better than me in terms of the growth of YouTube channels. They are doing much better. You can always debate about their content and my content, but that's not the thing. I'm just telling you that you are an entrepreneur, content creator. You don't have to really go out and seek a job. Maybe कोई दे रहा है नहीं दे रहा है, start your own channel, start your own website, sit 2 or 3 people, तुम लोग अपना वो करो, एक वेबसाइट करो, ये देखो, रिसर्च करो कि किस चीज की जरूरत है सोसाइटी को आज भी। जर्नलिज्म का वो कौन सा एस्पेक्ट है जो कि कवर नहीं कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या हम उस पर एक डेडिकेटेड वेबसाइट शुरू कर सकते हैं? 4-5 दोस्त बात करो उस पर कंटेंट क्रिएशन को लेकर। And why can't you have you ever explored your own society? Maybe there are old people there who can't उनके बेटे भी बाहर रहते हैं, who can't help themselves to even buy medicines. Can you make an app for them? Start with making an app for a society, for all the old people, कि they just have to type maybe, or maybe just they just have to send a kind of a tinkle or a message, कि contact me, and you know that they need something, they need help, and you have a network. Through that ad, you have a network where people reach them within 5 minutes. So बिल्कुल इस तरह से सोचिए आप लोग, और केवल ट्रेडिशनल चैनल्स में जाने की बात नहीं है। एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू हैव अ वर्ल्ड, आइडियाज आपको किसी तरह के भी हो सकते हैं, कम्युनिकेट करना जानना चाहिए। कम्युनिकेशन इज द एसेंस ऑफ जर्नलिज्म। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट, अब डिजिटल एप्स हैं, बट डिजिटल एप्स जो है वो, इसीलिए मैं कह रहा था कि अब डिजिटल मार्केटिंग भी अगर आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल वो एक नया आपको नया सीखने को मिलेगा, और दूसरी बात वो आपको हेल्प भी करेगा, आई मीन इन योर करियर ग्रोथ, यू नो। तो यहां तक का कुछ सवाल पूछना है किसी को तो बताओ। विशाल?
क्योंकि सर जिस तरीके से आपने बातें को रखा है, जिन पहलुओं को आपने उठाया है, ये बहुत ही जरूरी है जो स्टूडेंट जो है जो मार्केट में जाने वाले हैं जॉब के लिए। जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म की आपने बात बोली कि जिसमें हेल्थ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अभी कोई बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं आते हैं, और एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं आते हैं, और एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स नहीं आते हैं, तो ये दायरे पे जो स्टूडेंट्स हैं काफी हद तक काम कर सकते हैं और अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, आपस में ही फ्रेंड्स के साथ मिलकर शुरुआत कर सकते हैं, जरूरी नहीं कहीं पे नौकरी मांगने की जरूरत है। तो सर अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के दौर पर शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास कई क्वेश्चन आ रहे हैं, पर मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है सर कि एक स्टूडेंट जो होता है जो कॉलेज पास आउट करने वाला होता है, बहुत उस मानसिकता से लेके चल रहा हूँ जब आप स्टूडेंट थे, आपके दौर में इस दौर में काफी अंतर आया है, लेकिन एक स्टूडेंट जो होता है वो डिसाइड करने में बहुत ज्यादा परेशान होता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं। क्या मैं जर्नलिज्म में जाऊंगा तो जर्नलिज्म में मैं एंकर बनूंगा कि रिपोर्टर बनूंगा कि डेस्क पे काम करूंगा, अगर मैं रेडियो में जाना चाहता हूं, मैं प्रिंट में जाना चाहता हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का प्रश्न बहुत जरूरी है और आई थिंक सो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये डिसीजन कैसे लिया जाए। तो अगर इस पर आप स्टूडेंट्स को बता पाए। देखो विशाल, मैंने इस पर एक बात ये कही थी कि आपको ये चीजें अपने आप से भी पूछनी पड़ेंगी। आप अगर आपको लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पर्सन हैं, आप कैमरा वर्क अच्छा करते हैं और आप कैमरा से दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आई थिंक योर इनर कॉलिंग शुड ऑल्सो शेप यू इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग योर करियर पाथ. If you think that if you are able to kind of pinpoint the nuances of editing in a documentary or in a film, and if you are a great fan of Renu Saluja, who's done so many great films in Indian film industry, then I think that's your calling. You don't have to necessarily be an Arnab Goswami or a Ravish Kumar to be able to just do the talking, write a good script and express yourself on TV. But the thing is, I'm saying that there's a world which you see on TV, but there's a whole lot of world beyond that which you don't get to see, which you and I don't get to see as viewers. There are a lot of people who work to make Ravish Kumar what he is. He has a set of producers, he has a set of script writers, and he has a set of camera persons who go out and and they know that each other's works, and they know what this guy wants. So it's a teamwork always. So there's a team effort that goes into making everyone what they are. So don't get starry-eyed about faces you see on the channel, and don't aim for becoming an anchor just because you know what it means to become an anchor, what it means to become a reporter. Like for instance, if I say अभी मैं बोलूं मुस्कान, प्रिया यहाँ पे बैठी है, प्रिया बताइए हिजाब कंट्रोवर्सी पे 5 इंपॉर्टेंट बात बताइए। आप एक उस पे है, न्यूज चैनल की एंकर है, ब्रेकिंग न्यूज आई है, नोएडा के एक कॉलेज में हिजाब कंट्रोवर्सी हो गई वैसी जैसे कर्नाटक में हुई है, बताइए। You can always borrow the Karnataka facts and chalo in the next 10 seconds roll in the next 10 seconds. Priya, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. सर मेरे को ज्यादा जो कर्नाटका में जो हिजाब वाला कंट्रोवर्सी हुआ है, मेरे को उतना अपडेट नहीं है। मेरे को इतना पता है कि वो क्यों कर रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा था, तो अभी मेरे को एज सच पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप जर्नलिज्म में आप जैसे रिपोर्टर और एंकर फिर कैसे बनेंगी? तो इसका मतलब आपके लिए रिपोर्टिंग और एंकरिंग नहीं है, आपकी कंटेंट क्रिएशन, आप क्योंकि आपको नहीं पता है चीजें, तो you should seek out for other things which drive you, which have driven you to kind of do this course in the first place. आपने क्यों सोचा कि आप ये कोर्स करना चाहती, क्या करना चाहती थी, दिमाग में क्या चल रहा था? एडवर्टाइजमेंट, देखिए, है ना। तो देखिए मैंने उसके बारे में बात नहीं की, ये मेरी भी गलती थी। एडवर्टाइजमेंट की भी एक दुनिया है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की भी क्या दुनिया, वहां पे आपको छोटे छोटे 2 पंची लाइंस लिखने पड़ते थे, है ना। पंची लाइंस लिखिए अपने इस आज की क्लास के बारे में और मेरे बारे में, जिसमें मैं भी शामिल हूं और ये क्लास भी, लिखिए 2 लाइन। मुस्कान? यस सर। मोहम्मद, अरे क्या नाम, मन्नत चावला, मालविका भट्ट, कोई भी बोले, मैं ये कह रहा हूं कि यू डिसाइड, प्रभात शुंगलू, सुष्मिता मैम,
अमरीश सर, दे आर नॉट, विशाल सर नॉट गोइंग टू डिसाइड कि क्या करना चाहिए तुम्हें, तुम क्या चाहती हो. ईच हैज हिज ओन स्टोरी टू टेल. द स्टोरी का वाया मीडिया, कैमरा होगा, एडवर्टाइजिंग होगा, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होगा. दिमाग में अर्नब गोस्वामी बैठा है, सुधीर चौधरी बैठा है, रवीश कुमार बैठा है, अंजना ओम कश्यप बैठी हैं. बिल्कुल बैठाओ किसी को भी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, खैर अंजना ओम कश्यप और अर्नब गोस्वामी और वो करने के लिए तो तुमको कुछ भी नहीं करना होगा, पढ़ना भी नहीं होगा, ठीक है ना. लेकिन रवीश कुमार बनने के लिए तुम्हें कुछ पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, तुम्हें किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तुम्हें अखबार पहले पेज से लेके 16वें पेज तक बिल्कुल इश्यूज के बारे में पता करना पड़ेगा, दोनों साइड, हर चीज, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातें समझनी पड़ेंगी. तो वो क्या बनना चाहती हो तुम, तो हर के पास अपनी एक कहानी है, उसके हिसाब से चलेगा. दो घर में दो भाई बहन और दो बहनें भी होती है ना, तो वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती है और एक कहती मैं तो बिल्कुल नहीं बनूंगी. हाय तू ही बन, मैं तो नौकरी करूंगी ही नहीं. अब बता, तो ये भी होता है ना. तो कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता. तुम्हारी इनर कॉलिंग क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो विशाल, आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट बिकॉज dilemma is not about, see, they've already taken up a course, they are doing this course, so they want to enter into the field of communication. Communication can be Anurag Kashyap type communication also, Arnab Goswami type also. In the field of advertising, they can be their own YouTube presenter or entrepreneur, their own citizen journalist. Of course, I'm sure that most of them are not going to take up bank jobs, for sure. Sit behind the counter. है ना? यस सर. स्टूडियो 62 से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर ले, और बाकी लोग भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे चैट बॉक्स पे भेज सकते हैं. स्टूडियो 62 से एक क्वेश्चन है. हेलो सर, माय नेम इज हाँ. प्राची. सर मेरा आपसे सवाल ये है, विल प्रिंट जर्नलिज्म एज वी नो survive in today's decade? Yes, in a way, because see, we are kind of sort of facing a crisis where see, everything is driven by market and money. And yes, over the last decade, we have seen less and less of print, and we as consumers and as viewers and readers have switched on to digital forums for seeking out information, seeking out news concerning us and society. But we have also noticed at the same time that much of good journalism is still being done by the print industry, whether it's Indian Express or the Hindu or the Times of India. In fact, they are the ones who are still doing in-depth stories. They are doing investigative stories, and they have a mental makeup. And they know what their readers want. So, of course, not all these newspapers are, are revenue rich, but still they haven't closed down, and some of them have. Similarly, in fact, even in digital space, you have so many platforms now, you get confused. Even when you if you go to YouTube and seek out for people who are doing, you are making videos in the news and politics genre, you will see hundreds of them. So who is, and each one of them has his own subscriber base. They have their own viewership pattern. They have their own content and presentation style. So कोई बंद नहीं होने जा रहा है. बड़े चैनल्स, बड़े मीडिया हाउसेस तो बंद नहीं होंगे, है ना, ये तो पता ही लग गया है. जैसे कि डिजिटल के आने से ऐसा नहीं है कि चैनल्स बंद हो गए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया अभी भी वही है, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू. हाँ, अब कुछ पेपर्स जो है वो टीवी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री आने के पहले ही बंद हो चुके थे. जैसे नेशनल हेराल्ड आज भी चल रहा है. पेट्रियट अखबार था बहुत अच्छा, वो बंद हो गया है, दिल्ली से ही निकलता था. एक्सप्रेस वहीं पर है, एचटी वहीं पर है. Maybe they have shifted offices, but they're there. I mean, even आप देशबंधु अखबार है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, ये सब बड़े मीडिया हाउसेस भी हैं.
कोई बंद नहीं हुआ है। इन्होंने क्या किया है, ये ब्रांच कर गए हैं, ब्रांच आउट कर गए हैं इन द डिजिटल स्पेस एज वेल। तो अगर आप, अमर उजाला हैज अ वेरी लवली, वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, एंड सो हैज दैनिक जागरण। दैनिक जागरण की न्यूज वेबसाइट बहुत अच्छी है, आप देखिएगा जाके। और उनके, दे आर ऑल्सो केटरिंग टू यूथ ऑल्सो, उसके लिए अलग से उनका एक वेबसाइट, डेडिकेटेड वेबसाइट है। And now you have sports websites also, which are doing really well. Well, with Cricket Kida or cricketforum.com and whatnot. So you have dedicated sports websites also. तो आपके ऊपर है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक वेबसाइट आप भी तो क्रिएट कर सकते हो, आप एक्सप्लोर करो कि कहाँ पे कमी है, and that space that you can fill. Yeah. Good afternoon, sir. Sir, as we all know that technology keeps on changing. So, sir, my question to you is that currently now with the coming of 5G, sir, the practices that are being followed, the journalism practices that are being followed in rural area, will it anyhow change? The 5G will help in promoting or changing the practices of journalism in the rural areas? Not exactly 5G, but see, 5G is only going to provide us more technological power, right? In whatever profession we are in, it's going to kind of help us there. But the thing is, do we really want to change our outlook? Do we really want to bridge this divide between the sheher and the gaon? Are we really unconcerned about issues that beset the farmers, that beset, why is it that a man from a Dalit community is still not allowed to ride a horse in his marriage? Because, you know, there are people who want to stop him, won't let him घोड़े पे चढ़ना. तो ये क्यों हो रहा है? Unless you want to know that, unless you want to bridge the divide, 5G can just be on any other technology. But the thing is, technology, if it is not there to help human growth, then the technology is useful. And who's going to drive that human growth? People like you and me, not the technology. Technology is only going to assist us in making that jump, you know. So expand our horizons. So first we'll have to expand our horizons. India को समझने की कोशिश करो कि इंडिया में सिर्फ तिवारी, शर्मा, सिंह और श्रीवास्तव, सक्सेना, माथुरी नहीं है, उसमें यादव भी हैं, उसमें कुमार भी हैं, उसमें भील भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं। तो इनको कौन समझेगा? इनको कौन, ये भी तो इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम इंडिया दैट इज भारत को एक्सप्लोर करेंगे, और जब जो डिवाइड्स है उसको ब्रिज करने की कोशिश करेंगे, देन 5G विल हेल्प अस इन सो मेनी वेज एंड यू विल रियलाइज दैट। मेरा एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के रूप में ही है कि बहुत बार जब स्टूडेंट डिसीजन लेते हैं, जब वो जॉब में जाते हैं, तो उनकी अपनी एक माइंडसेट होता है, अपना एक आइडियोलॉजी को बना के चलते हैं। लेकिन कभी चैनल के साथ, ऐसे चैनल्स के साथ या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जहां पे उस आइडियोलॉजी को कोई नहीं, तो एज अ जर्नलिस्ट और एज अ रिपोर्टर आपको किस तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहिए, और आपकी आइडियोलॉजी न्यूट्रल होके किस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं? ये बहुत आजकल के चीज में कि झलके नहीं, रिपोर्टर को वो मांगा जाता है कि भाई निष्पक्ष हो, वो कि वो एक न्यूट्रल बात करे, चाहे वो किसी भी चीज से बिलोंग करता हो, लेकिन वो निष्पक्ष होकर चीजों को जनता को बताए। तो इस चीज से किस तरीके से स्टूडेंट्स को जब वो फील्ड्स में जाएंगे तो किस तरीके से इस चीज से वो हैंडल करें? फिर मैं स्टूडियो 62 का क्वेश्चन ले लूंगा। अच्छा सवाल आपने किया विशाल। द थिंग इज, द ओनली थिंग दैट शुड मैटर टू एनी स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म इज फैक्ट. You know, they should seek facts. That is the greatest force that is with them. Let's seek the truth. You know, the power of truth force. गांधी जी ने कहा सत्याग्रह. अब तो आप लोग सब लोग ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे फैक्ट्स आर सैक्रोसैंक्ट. फैक्ट्स हैं तभी परसेप्शन कैसे बनता है. फैक्ट्स से परसेप्शन बनता है और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के परसेप्शन बनता है. तो जब आप आइडियोलॉजी अभी एक तरफ रख दें, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो विशाल शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मतलब नहीं. अभी आप लोग जब शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए मतलब होना चाहिए फैक्ट क्या है, मैं जानती हूं इसके बारे में. जैसे कि अभी इससे बात कर रहा था कि भाई हिजाब वाले पे मैंने कहा बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा सर मुझे नहीं मालूम.
सवाल ये है कि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये कहना कि मुझे नहीं मालूम। पहले तो आप मालूम करिए। आपके लिए सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा ट्रुथ, सबसे बड़ा जो आपके साथ फोर्स है वो है सच्चाई, फैक्ट। भूल जाइए आइडियोलॉजी को। आप एक स्टोरी कर रहे हैं, फैक्ट्स क्या है वो मैटर करते हैं, ठीक है? तो एंड जर्नलिज्म पर से मतलब जर्नलिज्म इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट ऑन परसेप्शंस। परसेप्शन और वो सब हमारे लेवल पे आके मैटर करते हैं कि हम एक परसीव करते हैं इस तरह से चीज को, एक इशू को, और उसको ओपिनियन फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं कि जिसको अच्छा लगेगा वो देखेगा और जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं देखेगा, ठीक है ना? लेकिन मेरे वो फैक्ट्स पर आधारित है, ये मुझे पता है, ठीक है? अगर मैं उसमें इमेजिनेशन डाल रहा हूं, ठीक है, तो उसको उसके परसेप्शन को तोड़ मरोड़ रहा हूं, वो फिर आइडियोलॉजी का एक रूप ले लेती है। अभी आपको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं कि आपकी आइडियोलॉजी इज टू सीक द ट्रुथ, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, टू सी द वर्ल्ड, टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड इन इट्स माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, टू बी ऑब्जेक्टिव। Objectivity is your and should be your ideology. Seek the facts, seek the truth. Be objective, be fair, be objective. I'm not saying be neutral. You can never be neutral in your life. You should never be neutral, but it should always be fair, and always be objective, whether in emotional relationships or while gleaning facts. सर बिल्कुल सही बात आपने कही। मैं स्टूडियो 62 से ये लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है। स्टूडियो 62 से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। या अपना प्रश्न प्लीज, अपना क्वेश्चन। Sir, do you think in a few years news portals will replace conventional news channels? Well, see, अभी मत पूछो ये सवाल, तुम्हारे लिए अभी पूरी स्पेस है। अखबार नहीं बंद होने वाले, और तुम अखबार में काम करने नहीं जा रही हो, मुझे पता है, ठीक है? और कहीं कुछ नहीं अभी तक बंद हुआ और आगे भी बंद नहीं होगा। और क्यों बंद होगा? तुम अपना शुरू कर देना एक अखबार, करोगी ना? Sure, sir. Yes, हाँ sir. बिल्कुल, ये होनी चाहिए स्पिरिट। अगर बंद होने लगे ना, तुम कहना नहीं अब मैं वो काम करूंगी जो कि दुनिया मना कर रही है कि नहीं करना है। Yes, sir. भाई हाँ, तुम एक अखबार शुरू करना अपना। Definitely, sir. हाँ, और मैं उसमें लिखूंगा कॉलम एक, ठीक है? Absolutely, sir. बहुत Thank you so much. So now this is the end of the question and answer. Muskan. Thank you so much, sir, for such an insightful session. I would now request Dr. Sushmita Bala, Head of DME Media School, to give the concluding remarks. सबसे पहले तो थैंक्स। अभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसको मिल गई कि सर ने बोला कि मैं कॉलम लिखूंगा तुम्हारे उसमें, तो न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वाला है वो, उसके लिए तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि अगर सर ने आपके यहाँ कॉलम लिखना शुरू किया तो वो सर्कुलेशन वैसे ही अपने आप बढ़ जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू भास सर फॉर इंटरेस्टिंग सेशन, और स्टूडेंट्स के संग में इतना सब कुछ शेयर करने के लिए। क्योंकि जो जितनी सारी आपने बातें इनको इनके साथ की हैं, शेयर की हैं, वो अगर इसमें से कुछ % भी फॉलो करते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिकॉज लर्निंग प्रोसेस तो वो हमेशा के लिए होता है, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में बोला था। और हम सभी समझते हैं कि हम टीचिंग में हैं। मैं भले ही 60 से टीचिंग में 90 से टीचिंग में हूँ, लेकिन मैं आज भी जो स्टूडेंट से बात करती हूँ तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो सीखने का तो कभी अंत होता नहीं है, और हम हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने बहुत सारी बातें बोली, लाइक वर्ल्ड व्यू डेवलप करना। तो एग्जैक्टली वर्ल्ड व्यू डेवलप करेंगे तभी आपकी ओरिजिनलिटी बनेगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे, करेंगे। और जब आप पढ़ेंगे, रिसर्च वर्क करेंगे, तब आपके थोड़ा इंसाइट, आप कुछ चीजें प्रॉपरली सीख पाएंगे। क्योंकि आपको जब रिसर्च करना है, देन यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ।
अगर आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, तो पहले अपने को असेस करो कि कहाँ आप फिट बैठते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चॉइसेस लेके चलिए, जस्ट नॉट वन चॉइस कि आपको एक ही आपने डिसाइड किया कि हमें एक फील्ड में जाना है। आपके पास 2 चॉइसेस होनी चाहिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि हमें प्रोडक्शन में जाना है, लेकिन आपने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं किया। जैसा कि अभी आज भी सर ने बोला कि न्यू फिल्म आई है और अगर आप उसको देखते हैं तो आप हर एंगल से उसको देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सोचते हैं कि उन्हें एंकरिंग करनी है, उन्हें प्रोडक्शन में जाना है या उन्होंने प्रिंट मीडिया में जाना है, लेकिन आपको रिसर्च वर्क करना, आपको उन सारी चीजों को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना, एनालिटिकल होना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और हर फील्ड में सर ने अपने एक्सपीरियंसेस तो नहीं बताए हैं, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने किस और किन वजहों से किसी भी चैनल को छोड़ा। तो आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी एक बड़ी पोस्ट पे हो के अपनी उसकी एक आइडेंटिटी की वजह से, अपने काम की वजह से अपनी एक जगह बनाता है। तो सेल्फ आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना हार्ड वर्क करें, इन्वॉल्व डीपली इन योर वर्क, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। Whatever you want to do in your life, लर्न करो, सीखो, करो, पढ़ो, रिसर्च करो, एनालाइज करो, तभी कुछ कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ है और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को हमें ग्रैब कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास, हम आपको प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म, लेकिन उन प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आप रेडी नहीं होते हैं, आप तैयार नहीं होते हैं। सो अपने को पहले रेडी करिए, तैयार करिए, प्रिपेयर करिए कि हम उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाएं, वहां झंडे गाड़ के आए। तो हमारी इतनी तैयारी भी तो होनी चाहिए। अगर हम उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी फील्ड में अपने को सक्सेसफुल आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सो अपने को असेस करिए, अपने को फिट समझिए कि कहाँ आप फिट बैठ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करिए, एंड तभी कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे सर ने बहुत सारा बताया कि आपको अगर अपनी वेबसाइट, अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना है, पेट्स के लिए करना है, या आपको ओल्ड एज पर्सन के लिए कुछ सोचना है उनके बारे में, क्योंकि ये मुस्कान जो है ये बहुत कुछ काम इस तरह के करती है, मुझे पता है। तो आप सबको ये इस चीजों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। डेवलपमेंट इश्यूज बहुत सारे हैं हमारे कंट्री में, लेकिन हम उनकी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि इतने पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं और ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी को डिस्कस करना या जिनकी बात करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो उन इश्यूज से आप अलग हटेंगे, कुछ डिफरेंट सोचेंगे, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और आज का सेशन इतना अच्छा सेशन हुआ, प्रभात सर ने बहुत सारी चीजें तुम लोगों को बताई हैं, बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया है। थोड़ा थोड़ा जो भी है, जिसकी समझ में जो भी आया है, सिर्फ उतना भी अगर असेस करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ में अभी यंग हो, अभी तो स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में अगर हम काम अच्छे शुरू कर देते हैं, हम लोगों के टाइम में उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तुम्हारे टाइम में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारा काम कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, लेकिन बुक्स पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, केवल गूगल पर डिपेंड नहीं रहना है। यदि बुक्स पढ़ेंगे तो बुक से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू प्रभात सर, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दैट्स इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मैम, सुष्मिता मैम। सो आपने बुलाया, मुझे अच्छा लगा और इंटरेक्ट करने का मौका दिया यंग स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू अमरीश सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जब भी कहेंगे हाजिर हो जाऊंगा। जी सर, वो तो आपको आना ही पड़ेगा, और अब ये नॉर्मल होती है चीजें, तो फिर मैं आपको फर्स्ट ईयर के साथ में एक सेशन जरूर करवाने के लिए बुलाऊंगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है कि हमें ये चीजें पता चले, बहुत सारा इंटरेक्शन करना चाहते हैं,
जिन सेक्शन में मैं पढ़ा रही हूँ उनको बहुत सारी चीजें करनी हैं, तो काफी कुछ है लाइफ में करने के लिए। तो जरूर जब भी आपके पास टाइम होगा और जैसे ही इंस्टीट्यूट में नॉर्मल होती हैं सारी चीजें, तो आपको एक बार तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, एनी टाइम। Thank you so much, ma'am. थैंक यू Thank you. एवरीवन। The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.